This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरव। Welcome, sir, and thank you, Nikhil. Quick look at the headlines. Retail inflation rises to 7.41% in September this year. Domestic indices post gains of more than 0.8%, and Sensex regains the 57,500 mark. Nifty settles above 17,100 level. खुदरा महंगाई इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 7.41% हुई। घरेलू शेयर बाजार में आज 0.8% की बढ़त और सेंसेक्स में 57,500 के स्तर को फिर छुआ और निफ्टी 17,100 से ऊपर हुआ बंद। We begin with our first story of the day on inflation. Retail inflation based on the Consumer Price Index CPI rose to 7.41% in September this year compared to 7% in the preceding month. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, inflation climbed mainly due to a modest rise in prices of food and beverages, clothing and footwear, and fuel and light segments. In September, inflation in the food basket stood at 8.41% compared to 7.57% in August this year. During September 2022, inflation in clothing and footwear stood at 10.17%, while fuel and light witnessed inflation of 10.39%. The government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. In a related story, the Index of Industrial Production IIP witnessed a contraction of 0.8% in August against a growth of 2.4% in July this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the IIP had risen 13% in August last year. As per data, industrial output so far in the fiscal year 2022-23, April to August has risen 7.7% compared to a spike of 29% in the corresponding period a year ago. IIP is an index which details out growth of various sectors in the economy. The 8 core industries comprise more than 40% of the weight of items included in the IIP. These are electricity, steel, refinery, products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers. So talking about our first story about inflation, so what are these indicators? Are they expected or is there an aberration? No, I don't think there's any aberration. This is what was expected. And as you would know that Reserve Bank of India, which keeps a close watch and monitors these retail inflation numbers, for that central bank, this is a very significant number because this is the 9th month in a row that the CPI is stayed above 6%, which is, as you mentioned, that within the range of 2 to 6%. Right. So therefore, Reserve Bank of India now has to concede that it has failed to meet its inflation target, and therefore it has to report to the government that why it has failed to meet the target and what steps it would take to keep the inflation back within the range of 2 to 6%. It's a different matter whether what the RBI tells the government is made public or not, but certainly, as you would know, that in the last 4 instances of RBI has kept raising interest rates, right, in the hope that inflation will be kept under check. Looking forward, what you can say is the Reserve Bank of India's estimate is that from the second half of the year, inflation may moderate. Okay. Because if you look at the annual forecast of the retail inflation, it shows
some sort of a softening of the interest rate. Actually, for the full year, the interest rate is going to be around 6.7%. So not the 7.4% figure that we saw in September. So it's a picture that will certainly cause concern to RBI for managing its interest rate policy, the monetary policy. The government obviously will be worried and concerned in how to keep inflation under check. Absolutely, sir. And when we talk of inflation and inclusivity, I think these have to go hand in hand. And inflation does affect, and we know, the marginalized the most. So do you think that somewhere inclusivity, because earlier bringing down inflation was the most critical thing, even looking at growth parameters. So how do you think this will be managed? Well, you are very right by bringing in the inclusivity angle, because as a famous economist, I forget his name, said that inflation is the worst kind of tax, and it taxes the poor and the rich, not in the same way. The poor gets taxed a little more. Right. And that's where it affects the inclusivity point that you were referring to. So therefore, if inflation is not kept under check, then the general sense of welfare, the general sense of well-being, and it is happening at a time when, as you also read out just now, industrial growth is not in a positive territory. So you are having inflation for September at 7.4%. You are having industrial output which is contracted by 0.8%. Although the first 5 months it has grown by 7.7%. Right. But for the September number, August number for industrial production, taken together with September's inflation of 7.4%, it will be a policy challenge for both the Reserve Bank of India as well as the government. Right, sir. भट्टाचार्य जी, थोड़ा सा पीछे जाकर के अगर हम बात करते हैं तो कोविड का जो टाइम था उसमें काफी परेशानियां आई और औद्योगिक उत्पादन बहुत नीचे चला गया था, लेकिन देश ने बहुत ही तेजी से उसमें एक बढ़त हासिल की और काफी आगे हम आ चुके थे। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं हमारे पास उसमें ये 0.8% की गिरावट देखी गई है, जबकि इसी एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये 13% बढ़ गया था। तो आंकड़ों का खेल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं, लेकिन जो मार्केट है, मार्केट पर इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, ये तो पहली बात तो जो आपने जो कहा कि ये एक स्टैटिस्टिकल खेल है ये, और मैं आपको ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो फिगर है वो वैल्यू का नहीं है, वो वॉल्यूम का है। ये आईआईपी एक ऐसा एक मापदंड है जो वैल्यू से नहीं जुड़ता, वो वॉल्यूम से जुड़ता है। तो जो आपने कहा कि इसमें इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर आप जीडीपी को देखेंगे उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है थोड़ा बहुत, अगर आप नॉमिनल जीडीपी को देखेंगे, पर आईआईपी में एक्चुअल जो वॉल्यूम आउटपुट जो है उसको कैप्चर किया जाता है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जो स्टॉक मार्केट में इसका जो इम्पैक्ट होगा ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से ये फैक्टर इन हो चुका है। जो स्टॉक मार्केट में जो उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं वो बहुत सारे वैश्विक जो डेवलपमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उससे जुड़े हुए हैं। आईआईपी से मूड और भी जरा जटिल हो जाता है, बड़ा पेसिमिस्टिक हो जाता है, इस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा। पर इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल असेसमेंट जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स और ये डोमेस्टिक फैक्टर्स, ओवरऑल रिसेशन का आउटलुक क्या है, कितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट या इकोनॉमिक आउटपुट आगे की 5-6 महीनों में होंगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये इसमें गिरावट तो हम देख रहे हैं जो आईआईपी में हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जहां पर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विनिर्माण का जो क्षेत्र है भारत का, उसमें काफी हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं कि सारी चीजें मतलब कोशिश की जा रही कि हमारी जरूरत का जो सामान है वो इंडिया में ही बने। जरूर, जो आत्मनिर्भरता की जो आपने बात की वो तो सरकारी नीतियों की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, और आईआईपी जो सेक्टर्स जो हैं उसमें अगर आप विनिर्माण क्षेत्र देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें, और ये आईआईपी में जो उनका शेयर जो है 77% है। जी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो और अगर विनिर्माण क्षेत्र में आपका जो कंट्रैक्शन है मेरे ख्याल से 1.4 का मेरे ख्याल से एक कंट्रैक्शन है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो गति आनी चाहिए थी अभी तक आई नहीं है।
जी, हम एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो IIPS में बेस इफेक्ट भी काम करते हैं। पिछले साल 13% की, जैसे मैंने आपको बढ़ोतरी हुई थी। जरूर, एकदम बेस इफेक्ट में जरूर काम करेगा, क्योंकि जो पिछले साल में जो अगस्त में जो आपने जो 33% की मेरे ख्याल से वृद्धि हुई थी जी, वो उसका कारण ये था कि उसके पहले साल में का जो बेस बहुत ही खराब था जी, तो उसके बाद वो बेस बढ़ गया है। तो इसीलिए जो हमें ये देखना पड़ेगा ये कि अगस्त 2022 की जो लेवल जो है वो 2019 के लेवल के तुलना में कैसी है। जी, अगर 2019 के लेवल में तुलना में देखेंगे शायद ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, और इसीलिए जो मार्केट और जो इकोनॉमी जो है वो थोड़ा बहुत इस नंबर्स को देखकर थोड़े बहुत जो घबराहट से देख रही है, क्योंकि अंतर जो एक्चुअल इंक्रीज हुआ है 2019 के ऊपर ज्यादा नहीं हुआ है जी। वो आंकड़ों के अनुसार मेरे ख्याल से 3 से 4% का वृद्धि हुई है। वो अगर आप 3 साल में देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक चिंता का विषय जरूर बनेगा। Because talking about inflation, when we spoke about it earlier, I think one of the dangers of inflation also is that if it carries on over a period of time, then irrespective of even of a reversal, it doesn't come back. It tends to get built into the whole system, and then the negative effects carry on. How long is that time? You're very right. What happens in inflation is that inflation is something that is in itself a problem, but a bigger problem is inflationary expectations. Mm-hmm. Now, once you see this kind of inflation going on, staying above 6% for 9 months on running, then people start expecting that no, this inflation will probably go on, and the trade and many other elements in the economic value chain start exploiting that situation. Even behavior changes? Absolutely, absolutely, and you start seeing eroding your deposit value and everything. So it's a vicious cycle so one has to get out of that. Right. What do you think is the outlook of the manufacturing sector in the coming future, looking at the global scenario? And if we do that, is India on a strong footing? Well, I think the manufacturing sector will depend a lot on the kind of investments that we are making in creating fresh capacities, particularly in the infrastructure sector. Okay. If you want to depend on manufacturing sector demand for global situation, then I think we will be disappointed, because globally there are fears that the world is probably getting into a recessionary phase. Mm-hmm. Now, so therefore our savior is not going to be the global market. Our savior will be the domestic market, and the domestic market can be helped by increasing investment, and particularly in creating capacity in the infrastructure sector. And as a matter of fact, the government has increased its capex quite substantially in the first 5 months. If you look at the Controller of General Accounts numbers, you will see how the government's capital expenditure has seen a huge increase, and actually for the whole year it is budgeted to go up almost by around 32 or 33%. Now that is key to sustaining manufacturing demand revival. That was your question. Right, and earlier we spoke of Atmanirbharta, and I think this is truly Atmanirbharta when you can create your own market and your supply. You are right. मैं एक चीज और आपसे थोड़ी सी इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, इनका मतलब बाहरी जो हमारे मतलब देश के बाहर के जो रीजन्स हैं उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये कि आरबीआई अब क्या नेक्स्ट मूव ले सकता है, खासतौर पर जब फेड के इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं, तो उस दिशा में अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो इन्फ्लेशन इस वक्त जो है काफी हद तक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, मतलब जो आयात के तरह से वो क्योंकि हम तेल जो है, हमारा कच्चा तेल जो है वो करीबन 85% हमारी जो खपत जो है वो हम आयात करते हैं, और तेलों के दाम पिछले कई महीनों में थोड़े कम हुए थे, 115 116 से घटकर 90 के नीचे आ गए थे, पर फिर से वो बढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा आज भी थोड़ा बड़ा है। तो अगर तेलों के दाम बढ़ते रहें और एलिवेटेड रहे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार उनका असेसमेंट है कि अगर $100 बैरल तक रहे तो शायद हम इस साल इसको हम मैनेज कर सकेंगे। पर अगर जो हमारी जो कमोडिटीज साइकिल जो है इंटरनेशनल, जो हम चीज इंपोर्ट करते हैं, जैसे कोयले का इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कोयले के दाम बढ़ गए हैं,
कच्चा तेल जो है उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल्स, ये सारी चीजों से मैं मानता हूं कि इन्फ्लेशन में डोमेस्टिक फैक्टर्स तो थोड़ा बहुत है, पर उससे साथ साथ बड़का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल फैक्टर्स का इम्पैक्ट है, और उसके ऊपर हमारी ज्यादा कंट्रोल नहीं है. Right. And if you feel that it does, the prices of oil do go further, what do you think is an expectation of the basis points? Well, I think in the December review, there is an expectation that Reserve Bank of India may well have to go in for another increase in its interest rates. Maybe 50 basis points, but probably that is a bit too early. Before the December policy review takes place, we will see another set of numbers. Okay. The IIP numbers will come in, even the GDP numbers will come in, and most importantly, the retail inflation number for September will come in. Right. Now, if that comes, then only Reserve Bank of India probably will be in a better position to take a call. But 35 basis points cannot be ruled out. Okay. 50 basis points is a possibility depending on the inflation trajectory. और आज आरबीआई की कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन इसके पहले में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र में. और हमने जिक्र किया था कैबिनेट की मीटिंग का, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है. वहीं मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्ते नई योजना प्रधानमंत्री विकास पहल को भी मंजूरी दी है. और दूसरी खबर पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में कांडला बंदरगाह के निकट टूना टेकरा में बहुउद्देशीय कार्गो सुविधा और कंटेनर टर्मिनल के विकास को स्वीकृति दे दी है. ये परियोजनाएं कंटेनर कार्गो यातायात में भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी. और श्रोताओं को बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2002 के संशोधन का प्रावधान किया गया है. AK sir, talking about cabinet which has approved the multi-state cooperative societies amendment bill. A little background for us to understand. You know, this is a very, very important bill. Because it covers cooperatives, outfits which operate in more than one state. Now you've got many banks, many dairies, many credit societies, housing societies, they operate in more than one state. Now this is a bill that will now give these cooperative outfits some sort of regulatory structure, election processes. Now, right now, there was no set guidelines on how they will elect their members, how will they get them regulated, and how will the election process will be held. Now, this rule will actually, this law will put in place those giving clarity, and I think it's a very forward-looking step that the government has taken. और शेयर बाजार पर अब नजर डालें तो सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.8% लाभ में रहे. दोनों सूचकांकों में बढ़त वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त हुए मिले जुले संकेतों के बीच आई और सेंसेक्स 57,500 से ऊपर तथा निफ्टी 17,100 के स्तर से ऊपर जाकर बंद हुए. कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.84% की वृद्धि के साथ 479 अंक ऊपर आकर 57,626 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.82% की तेजी से 140 अंक चढ़कर 17,124 पर बंद हुआ. विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक
सूचकांक 0.66% लाभ में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.22% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ. The Sensex and the Nifty today gained more than 0.8%. Both indices rose amid mixed cues from the global share markets. The Sensex closed above the 57,500 mark, while the Nifty settled above the 17,100 level. The Sensex climbed 479 points or 0.84% to finish at 57,626. The Nifty also surged 140 points or 0.82% to end at 17,124. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 0.66% and the small-cap index added 0.22%. In the Sensex pack, 25 companies posted gains while 5 logged losses. Power Grid surged 3.5%, Axis Bank climbed 2.9%, NTPC gained 2.4% and IndusInd Bank added 2%. On the other hand, Asian Paints tumbled 1.6%, Dr. Reddy's plunged 1.3% and Bharti Airtel declined 0.6%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged gains. The realty sector gained the most as it surged 1.7%, followed by FMCG, which added 1.4%. Power and Bankex sectors both added 1.1% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,674 companies gained, while 1,763 fell. Shares of 134 companies remained unchanged. Ikisa, when we see this and we have distinct sectoral movements, what do they indicate? Well, I think they indicate that the overall mood is still gloomy. Okay. But this is a kind of a relief rally. You have seen the stock markets plunging for 3 consecutive sessions. And today is some sort of a relief rally based on reassessment of the positions that various stakeholders are taking. So I don't see that the volatility or the stock market regaining, newer highs. Those chances are those possibilities are very, very remote. Till clarity emerges on what will be the intensity of the kind of global economic slowdown, that clarity does not emerge. I think stock markets will continue to remain volatile. It's a market where you cannot go in for index or indices. You have to go in for specific sectors, specific stocks. And as I keep saying this, that this is not the time where the stock market is meant for the weak-hearted. You need people with really strong hearts to get into stock market right now. Right. जो बात आपने कही वही मेरे मन जहन में आ रही थी कि मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि क्या ऐसा समय आ चुका है जब स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, इस वक्त जो अवस्था जो है स्टॉक मार्केट की, इस समय अगर आप स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक सेक्टर्स को ट्रैक कर रहे हैं अच्छी तरह से, अगर मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था एक अच्छी जगह से जा रही है, गुजर रही है जी। अगर आप बैंकिंग व्यवस्था में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, पर अगर आपकी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जी, तो स्टॉक मार्केट उसके लिए इस वक्त नहीं है। स्टॉक मार्केट इन एनी केस हम जो कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, एक सेविंग्स एवेन्यू है। अगर आप 5 साल की अगर आप एक विजन रखते हैं, एक असेसमेंट रखते हैं, तो मैं समझता हूं स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छी जगह है जी। एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डालें तो आज मिला जुला रुख देखा गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.5% लाभ में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हेंग सेंग 0.4% लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की गिरावट आई। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो यहां भी कारोबार में मिला जुला रुख देखा गया। जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था और फ्रांस के कैक में 0.2% की वृद्धि हुई, जबकि लंदन का FTSE 100 0.1% नीचे आ गया। A quick look at the US market. The S&P 500 and Nasdaq ended lower yesterday with indications from the Bank of England that it would support the country's bond market for just 3 more days, adding to market jitters late in the session.
The Dow Jones Industrial Average Index added marginally by 0.1%, while the S&P 500 fell 0.7% and the Nasdaq Composite declined 1.1%. In oil prices, oil today recovered some losses from a 2% slide in the previous session. The crude prices rose, supported by supply concerns stemming from last week's OPEC Plus cut to its production target. However, a stronger dollar weighed on investor sentiment. In intraday trade, Brent crude was trading at $94.80 per barrel, while WTI crude prices were at $89.70 per barrel. Ikisa, increasing oil prices posing a greater vulnerability to India's external accounts, and do you think this OPEC's decision now to decrease, and also I think the G7's moves to prepare for saying we want to put a cap to Russian prices. Now, India's the effect on India on this? Well, I think the effect of all those developments are not going to be very positive, because as I said earlier, that we depend a lot on our crude oil imports for meeting domestic demand. Of course, there's a lot that is happening to move away from the traditional fossil fuel based economy, but the larger concern is that global stock position for oil is at decades low level. Now, on top of that, you are hearing demands for a cap on production. Right. Now, if you take these two things together, at one level you have a decades low stock position, and on the other hand, the producers themselves are wanting to put a cap. Now, this is a lethal combination, and that, to my mind, will make sure that the oil prices don't come down. What is probably going to prevent a spike in the crude oil prices is the global economic situation, where the recessionary conditions prevailing is counteracting this possibility of crude oil prices going up further. Because even though the stock levels are low, the producers are putting a cap, and yet the demand is not really going up very much. So it is counteracting each other, and therefore you're going to see the crude oil prices hovering at around 90, 100, 90, 100. Okay. But I think a country like India, which imports a lot, will have to plan its consumption, plan its economy, keeping in mind that oil prices will remain elevated for some time to come. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 82 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उधर विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.05% की बढ़त के साथ 113.28 पर था। भट्टाचार्य जी, बहुत ही कम शब्दों में रुपए के बारे में आपके विचार? देखिए, रुपए में इस वक्त जो हमारी जो इंपोर्ट जो है और जो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में जो कंट्रैक्शन जो हुआ है सितंबर का, उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड बढ़ गई है और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर कम है, तो इसीलिए रुपए में नरमी जो दिख रही है उसी का एक प्रधान कारण है। जी, सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 200 रुपए कम होकर 50,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 710 रुपए की गिरावट से 57,820 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,675.30 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी गिरावट दर्ज करते हुए $19.20 प्रति आउंस पर थी। AK sir, thank you very much for coming on to our program. It's a pleasure to have you on the show as always. Thank you. And now, before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation rises to 7.41% in September this year. Domestic indices post gains of more than 0.8%. Sensex regains the 57,500 mark. Nifty settles above the 17,100 level. And that's it in this edition of our program. Namaskar. Namaskar.